Hello friends, today we will learn how Indian traditional cooking is directly related to our internal body system, or you can say our internal digestion process. आज हम सीखेंगे कैसे हमारी बॉडी जो इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग है उससे रिलेट करती है. सो लेट्स सी इन ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग वी यूज चूल्हा. चूल्हा इज लाइक मेड ऑफ मड. Indian we know this. Sorry for my bad drawing. This is made of mud. ये चूल्हा आप जो जानते होंगे जो मड से बनता है, मिट्टी से, और इस पे पॉट रखा जाता है लाइक दिस. फायर स्टिक, लकड़ियाँ होती हैं वुडन. with this fire, and this is our rice, and this is water. We are cooking rice. Okay, now there is one more thing. There is a man who blow this pipe into this pipe to blow this fire. Okay, I hope you can understand. ये हमारा एक पॉट है जिसमें राइस पक रहा है. ये हमारे वाटर है, इसमें राइस है, और ये लकड़ियाँ जला रहे हैं. और ये जो मैन है वो इस रॉड से फूक रहा है इसको. ओके, यू ऑल नो डैट. बट हाउ दिस कुकिंग इज रिलेट टू आवर डाइजेशन प्रोसेस, लेट्स सी. दिस पॉट is equal to stomach. Okay, and this water is HCl, and this rice is today food. Okay, and this villi is small intestine. Okay, this wood is yesterday food. Okay, and this blowing air is Q, or energy, or in Ayurveda prana. Okay, so your yesterday food give the energy to this stomach pot HCl to burn the today food. ओके, आपका कल का खाना आज के खाने को पचाने के लिए एनर्जी देता है. सो यू शुड वेरी अवेयर while taking any food, because today food is responsible for digestion of
tomorrow food plus what mistake we did while eating a meal. See, what can we do? We take water with food. So what happen, हम क्या करते हैं, हम खाने के साथ पानी पीते हैं। तो वो क्या करता है, add water to this pot with food, then this food become cold, this pot water become cold. ओके क्या होगा, अब जब आप पानी डालेंगे तो ये जो राइस बॉईल हो रहा है वो कूल हो जाएगा, तो खाना पचेगा नहीं. सो दैट food not digest properly and the energy, whatever energy is consumed to bake this food is become low. ओके होगा क्या कि जैसे ही आप पानी डालेंगे ये हो जाएगा ठंडा, इसको पकाने के लिए, फूड कुक करने के लिए जो एनर्जी है वो हो जाएगी लो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वाटर फिर से कोल्ड हो गया है. सो होगा क्या, आपको इंडाइजेशन. सो व्हाट कैन दिस प्रॉब्लम मेक यू सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, indigestion, unprocessed food, gas, bloating, acidity, and so on. This small mistake will give you a lot of trouble. So please remember that. Okay, I hope you will like it. Thank you so much for watching. आपकी ये छोटी मिस्टेक आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम में और कितनी सारी डिजीज़ दे सकती हैं ये आप जानते हैं. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.